Hello, hi, and welcome everyone. So, today we are going to discuss about ICN and its principle. So, what is ICN? ICN stands for International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plant. Previously, it was known as ICBN, that is International Code of Botanical Nomenclature. Then, ICN was established in 2011 at the International Botanical Congress in Melbourne. Here they replaced the ICBN by ICN. So what is IBC? IBC is the International Botanical Congress. Basically, it is a meeting of all the botanists and taxonomists where they discuss and different rules and principles of taxonomy, ICN, and different problems of it. They change different rules and amended. It held in every 5 years. So, what is the importance of ICN? ICN and its rules are basically for nomenclature of unidentified plant species. Its importance is basically to giving a particular scientific name to a particular plant. So इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, साइंटिफिक नेम की ज़रूरत क्या पड़ी? In different regions, there are different vernacular names for a single plant species. So, to avoid the confusions and maintain the universality, the scientists and all the taxonomists propose the scientific name concept. First, it was a polynomial concept, polynomial nomenclature, जहाँ पे एक बहुत लंबा सा नाम दिया जाता था. Then there is a concept called binomial nomenclature was introduced. So, as per the binomial nomenclature concept, there is two name, that is the first is genus name and the second is species name. Both are underlined separately and both should be Latinized. The first letter of the genus will be capitalized but not for the species. So, this was firstly proposed by Bahuit, but it was firstly applied by Carolus Linnaeus. Then come to the principles of ICN. As we all know, there are 6 principles and 75 rules are there. Let's discuss them. Principle 1. Botanical nomenclature is independent of zoological nomenclature. Means there is a word called tautonym. Tautonym means when the generic name and epithet name both are same. Tautonym is rejected in botanical nomenclature, but it is accepted in zoological nomenclature. So, zoological nomenclature में कोई भी रूल्स हो, उसका कोई भी इम्पैक्ट बॉटनिकल नोमेनक्लेचर पर नहीं पड़ेगा. It applies to plant taxonomic group even they are not treated as plant. Malus is converted into Pyrus malus. Then principle 2. The applications of names of taxonomic group is determined by means of nomenclatural types. So, when a taxonomist work on any specific plant species, when he visit to the field, he collect some plant twig of a species. So, the first species picked, that is the referral point of the plant collected species, and that is called as holotype. And on the same day, same time, but that other plant collected by the taxonomist are called as isotype. Then the undesignated species that collected at the same day and same time are called as syntype. From the same locality at
different time, collected species are called as paratype. Then lectotype. After destruction of holotype, isotype is designated as holotype. When all the holotypes are destroyed by any cause, then one species of the isotype is designated as holotype, that is lectotype. Then neotype. Any voucher species collected by the author is designated as holotype, then it is called as neotype. Is there any mistake in the holotype or the isotype, then the newly collected species is called as topotype. So basically holotype क्या होता है, जो फर्स्ट स्पीशीज कलेक्ट किया जाएगा उसमें से एक ट्विक को लेके बोलेंगे कि दिस इज द रेफरल पॉइंट ऑफ द प्लांट स्पीशीज और हर्बेरियम, वो होता है होलोटाइप. देन उसके साथ जो बाकी प्लांट कलेक्ट किए गए होंगे उनमें से 2-3 ट्विक को बोल देंगे दिस आर द आइसोटाइप. मतलब अगर कभी भी होलोटाइप में प्रॉब्लम होगा तो उसे यूज़ किया जाएगा. और कुछ ऐसे ट्विक्स या प्लांट स्पीशीज होंगे जिनको कुछ भी डेजिग्नेटेड नहीं किया गया होगा, ना होलोटाइप ना आइसोटाइप, उनको बोला जाता है सिन टाइप. देन लेट कंसीडर कि वो टैक्सोनॉमिस्ट ने जो प्लांट कलेक्शन किया था वो उसके फ्लावरिंग के टाइम पे कलेक्शन किया था, तो उसमें फ्रूटिंग नहीं थी तब. जब बाद में उसने स्टडी करना चाहा तो उसे ज़रूरत पड़ी उसकी फ्रूटिंग की, तो वो क्या करेगा, उसी सेम लोकेलिटी में जाएगा बट एट द डिफरेंट टाइम टू कलेक्ट दैट प्लांट स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज पैराटाइप. देन मान लो अगर किसी भी वजह से होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो गया तो जो आइसोटाइप पहले डेजिग्नेट किया गया होगा उसमें से एक को आइसोटाइप बोल देंगे, सॉरी होलोटाइप बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज लेक्टोटाइप. मान लो कोई भी वाउचर स्पीशीज कलेक्टेड किया गया था, आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ होलोटाइप और आइसोटाइप, जब उस वाउचर स्पीशीज को हम होलोटाइप की तरह लेंगे तो उसको बोलते हैं न्यूटाइप. अगर एक साइंटिस्ट ने काम किया है किसी भी प्लांट स्पीशीज पर और उनसे मान लो कोई भी गड़बड़ हो जाती है, उन्होंने किसी एक प्लांट का फ्लावरिंग ले लिया है और दूसरे प्लांट का फ्रूटिंग ले लिया है, जब कोई दूसरा साइंटिस्ट उसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये मिस्टेक्स हैं तो वो फिर से उसी फील्ड में जाएगा और फिर से वही प्लांट को कलेक्ट करेगा और तब जो होलोटाइप और आइसोटाइप ले जाएंगे उसे बोलते हैं टोपोटाइप. Then come to principle 3. The nomenclature of taxonomic group is based on priority of publication. So what is priority of publication? मान लो 2 साइंटिस्ट हैं जो एक ही प्लांट पे काम कर रहे हैं और दोनों ने अपना काम एक साथ कंप्लीट किया, मगर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1 तारीख को अपना प्लांट पब्लिश किया और दूसरे साइंटिस्ट था जिन्होंने 3 तारीख को पब्लिश किया. तो जो 3 तारीख को पब्लिश करेगा उसका नाम रिजेक्टेड हो जाएगा और जो 1 तारीख को पब्लिश किया रहेगा उसका नाम एक्सेप्टेड होगा. उसे बोलते हैं प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन. यहाँ पे एक और वर्ड आता है सिनोनिम. इन टैक्सोनॉमी सिनोनिम इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ एनी टैक्सॉन बट इज नाउ सप्रेस्ड बाय द अनदर मोर वाइडली एक्सेप्टेड नेम. मीन्स एक ऐसा टैक्सॉन है, लेट अस कंसीडर कैमेलिया सिनेंसिस. कैमेलिया सिनेंसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टी प्लांट. So it was firstly published name, that is Camellia sinensis, but later one more name, that is Thea sinensis, was published for the same tea plant. But due to some reasons or mistakes or confusions, the Thea sinensis name was more widely accepted than Camellia sinensis, and now it is a multi-billionaire trillionaire
industry depends on it. So we can't change the name, and we can't publish it now as Camellia sinensis. So we say the Thea got conserved over Camellia. It is called as nomen conservandum. फिर जहाँ पे जो नाम पहले पब्लिश किया गया था वो सप्रेस हो जाएगा, और जो नाम बाद में पब्लिश किया गया था वो वाइडली एक्सेप्टेड हो जाएगा. देन प्रिंसिपल 4. Each taxonomic group with a particular circumstances, positions and rank can only bear one correct name. किसी एक पर्टिकुलर रैंक का, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक ही करेक्ट नेम हो सकता है. Then come to principle 5. Scientific name of any taxa are treated as Latin. कोई भी नाम हो उसे लैटिनाइज्ड फॉर्म में ही ट्रीट किया जाएगा. वेंडा विच मीन्स ऑर्किड, सैशा विच मीन इज जापानीज वर्ड, गिंको विच इज़ एक चाइनीज वर्ड. जब भी इसका यूज़ किया जाएगा दैट ऑल विल बी लैटिनाइज्ड. देन कम टू प्रिंसिपल 6. द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव unless expressly limited. Okay, done. So let's take a quick revision of the 6 principles. What is the principle 1? Botanical nomenclature is independent of zoological nomenclature. Principle 2. The applications of name of taxonomic group is determined by the means of nomenclatural type. Principle 3. The nomenclature of taxonomic group is based on the priority of publication. Principle 4. Each taxonomic group with a particular circumscription, position and rank can bear only one correct name. Principle 5. Scientific name of any taxa can be treated as Latin. Principle 6. The rules of nomenclature are retroactive unless expressly limited. Thank you.